the land of seekers. मतलब अगर आपको किसी को भी भगवान मानना है या फिर किसी को भी कुछ भी करना है, तो सिंपल सी चीज है, उनसे सवाल पूछो कि भाई ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है. Just like in Bhagavad Gita, what we see that Krishna is telling the answers of the questions raised by Arjun. Okay, so Upanishads are basically the conversation between teacher and a student. If you are not having any doubt, then there is no benefit of teacher. Okay, if there is no benefit of teacher, अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो टीचर को कोई बेनिफिट ही नहीं है. ठीक है. Approaching and sitting near, conversation between teacher and student, idea through dialogues. So इस टाइम पे क्या होता था, श्रुति के थ्रू, मतलब through the ways of music or through the ways of conversation. That's why Indian people still loves music in Bollywood movies. Okay. That's a joke. Jokes about idea through dialogues. So whatever the dialogue happens between the teacher and the student, so ideas emerge from them. So India is basically the land of seekers, and Upanishads are basically the conversation between teacher and student. मतलब teachers अगर आप doubt पूछते हो या फिर teachers आप question raise करते हो, then you are in the part of Upanishads. Okay, Upanishad knowledge. उपनिषद के टाइम पे मतलब लेटर वैदिक पीरियड में उपनिषद लिखे गए थे, तो उस टाइम पे लोग टीचर से सवाल करते थे कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है. सो दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हमेशा रेज योर क्वेश्चंस. ओके, हमेशा ऑलवेज रेज योर क्वेश्चंस, whatever in whatever the way you should always raise the question. Several thinkers, several questions. मतलब जितने ज्यादा दिमाग उतने ज्यादा सवाल, और उतने ही ज्यादा सवाल को ढूंढने का जज्बा होना चाहिए हर किसी में. सो ये उपनिषद की नॉलेज है. सेवरल थिंकर्स, सेवरल क्वेश्चंस. लाइफ आफ्टर डेथ. सो लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में भी बताया गया कि व्हाट हैपेंस लाइफ टू द लाइफ आफ्टर डेथ. ओके, द सोल, what is said in Upanishad is that the soul get transferred from one body to another body. Okay, the soul get transferred from one body to another body. Why sacrifices? Because if you sacrifice something, sacrifices doesn't mean killing of animals, doesn't mean मतलब जैसे हम देखते हैं कि सेक्रीफाइसेस का बेसिक मतलब सबके दिमाग में ये आता है कि जस्ट किल एनिमल्स. सेक्रीफाइसेस मींस जो भी आपकी मतलब मनपसंद चीज हो उसका सेक्रीफाइस करना. फॉर एग्जांपल, आपकी फेवरेट चीज आज के टाइम पे क्या है? मोबाइल फोन. ओके, मोबाइल फोन इज योर फेवरेट थिंग. सो कभी कभार उसका सेक्रीफाइस करके देखिए. इट इज वेरी गुड. ओके, मेरे से तो हो नहीं सकता है. आत्मा एंड ब्रह्मा परमानेंसी इशू. आत्मा एंड ब्रह्मा परमानेंसी इशू. ओके, आत्मा और ब्रह्मा जो है वो एक परमानेंट इशू है. इसके बारे में भी बताया गया था कि द ब्रह्मा इन later Vedic period, what happens that people were just focused that how the universe is getting modified. मतलब यूनिवर्स कैसे बन रहा है और यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं. तो आत्मा और ब्रह्मा आप सभी को जो गॉड के तौर पे दिखाए गए हैं वो ब्राह्मण्स के द्वारा दिखाए गए हैं. Otherwise, Brahma was always considered to be as the one who constructed the Brahman. So geography. So we basically read geography through Brahma. Okay, Brahma has books. Brahma has many things. Brahma has all the geography in it. Okay, so Brahma means Brahman has permanency issue. कि ये परमानेंट है या नहीं है. ठीक है,
तो ये चीजें इन चीजों के बारे में डिटेल में दिया गया है उपनिषद में. Many such ideas recorded into Upanishads. Part of later Vedic text. Part of later Vedic text. Most thinkers, Raja and Brahmins. Most thinkers were Raja and Brahmins. Raja and Brahmins. So just after later Vedic, just at the end of later Vedic period, there was the emergence of Buddhism and Jainism. There was a origination of Buddhism and Jainism, and that lead to the Renaissance into the society. That lead to the Renaissance. Renaissance basically means कि आप पुनर्जागरण करें, मतलब अपनी सोच को अच्छी तरह सुधारें, उसे थोड़ा सा फिल्टर करें. ठीक है, उसे थोड़ा सा फिल्टर करें कि भाई आप ये चीज करते हो तो ये चीज गलत है. ठीक है. Seldom women like Gargi. Seldom women like Gargi. So Gargi was a great writer at this time period, and she does many of the incredible work in the later Upanishads. Okay, rarely poor except Satyakama Javala. Uh, except Satyakama Javala. Satyakama Javala. So she was poor, but she was a scholar also. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? स्कॉलर्स की. स्कॉलर्स कभी पुअर नहीं होते थे उस टाइम पीरियड में, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में जो भी स्कॉलर्स थे वो पुअर नहीं थे. जस्ट लाइक गार्गी, वो भी पुअर नहीं थी. शी वाज इनक्रेडिबल एंड शी वाज अर्निंग गुड. सो बस एक एग्जांपल है सत्यकामा जाबला. सत्यकामा जाबला, son of a slave woman Jabali, because he was son of Jabali. He was son of Jabali. Brahmin teacher Gautam. Brahmin teacher Gautam. So he was under the Brahmin teacher Gautam. So that's why Satyakama Jabala was rarely poor. Was rarely poor, but she was a scholar also. Okay. शंकराचार्य. सो यहाँ पे हम स्कॉलर्स की बात करते हैं. शंकराचार्य डेवलप्ड मेनी ऑफ आइडियाज ऑफ उपनिषद्स लेटर. चंदोगया उपनिषद, द वाइस बेगर. चंदोगया उपनिषद चंदोगया के द्वारा लिखी ये, दीज आर द फेमस उपनिषद्स. ओके, दीज आर द राइटर्स, दीज आर द फेमस उपनिषद राइटर्स. ओके, तो इनके द्वारा लिखी गई उपनिषद द वाइस बेगर. The wise beggar. Panini, the grammarian. So he discovered the grammar. He discovered the grammar. Okay, prepared grammar for Sanskrit, arranged vowels and consonants in special orders, created formulae, wrote rules in form of formulae. Wrote rules in form of formulae. So whatever the formula is, so he wrote those rules into that format. Okay, in the format of formulas, कि अगर ये चीज करेंगे हम तो ये चीज हो जाएगी. जस्ट लाइक हम इकोनॉमी में क्या करते हैं कि मतलब लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ा देते हैं ताकि करेंसी का फ्लो मार्केट में ज्यादा हो जाए, और हम एक फॉर्मूले के थ्रू चलते हैं हमेशा कि करेंसी का फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और फिर हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस दैट ऑलवेज द फॉर्मूला डजंट वर्क, बट रूल्स आर देयर. सो द रूल्स आर मेड इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. Whatever the formula is, so the rules were made according to the formula by Panini. So इनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. He was the grammarian and prepared grammar for Sanskrit. Sanghas, Mahavira and Buddha both advocated leaving name to gain true knowledge. Okay, they both were Kshatriyas, they both were kings. So they both left their homes to gain true knowledge. Although they were rich, but they can leave their home to gain the true knowledge. Although many of the Kshatriyas in the previous time periods go outside from their house, they didn't become that much popular because the society was good at that time period.
But when the society is declining and someone is giving the hope that society can upgrade, so religion can flourish within a single day. Within a single day, if someone gives the hope that by this idea you can do better things to the society, because Brahmins were डिटराइटिंग, मतलब सोसाइटी का डिक्लाइनेशन हो रहा था बहुत ज्यादा ब्राह्मण्स के टाइम पीरियड में। वो क्या कहते हैं, डाउरी मांगते थे वो, बहुत सारी चीजें मांगते थे, मतलब वाइफ वाइफ तक भी मांग लेते थे किसी की कि आप अपनी वाइफ को छोड़ दीजिए। और मतलब दे वर जस्ट डिक्लाइनिंग द सोसाइटी एट अ वेरी हाई लेवल एट दैट टाइम पीरियड। Okay, Sangha was an arrangement to stay together. So that's why Buddha and Mahavira, they left their home at the time, true time period. मतलब अच्छा अच्छा खासा टाइम पीरियड था जब सोसाइटी डिक्लाइन हो रही थी। उस टाइम पे इन्होंने नए आइडिया देके सोसाइटी में एक रहने सा लेके आए। ओके, संघ was arrangement to stay together. संघ was an arrangement to stay together. So आज के टाइम पे आप संघ के तौर पे किसे देखते हैं? आरएसएस। आरएसएस के तौर आरएसएस को देखते हैं तो इट इज अ गुड अरेंजमेंट टू स्टे टुगेदर। इट इज अ गुड अरेंजमेंट टू स्टे टुगेदर बिकॉज आप सभी ने जैसे कि उनकी परेड्स देखी होंगी तो दे वॉक इन वेरी सीक्वेंस मैनर। ओके, बहुत अच्छे सीक्वेंस मैनर में चलते हैं और दे हैव अ गुड डिसिप्लिन। एंड in the same context you can take the armies also. So the armies also, the arrangement to stay together. So it sangha were the arrangement to stay together. So जितने भी पंडित होते हैं उनके उनका अपना अलग अलग एक संघ बनता है। जितने भी पहलवान होते हैं उनका अपना अलग एक संघ बनता है। So संघ are an is an arrangement to stay together of a particular community, of a particular community. Association of all such people, Varna ranks and family forgotten once the Buddha's followers joins monks. Varna ranks and family forgotten once the Buddha's follower joins monks. Okay. सो वन रैंकिंग में जैसे लोवेस्ट में जो लोग आते थे, जस्ट लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, they all joined the Buddhism. They all joined the Buddhism because they were suffocating because of Brahmins in Hindu religion. Okay, because of Brahmins in Hindu religion, they were torturing them, they were exploiting them. Okay, so in this way, the Varna ranks and family forgotten. जो जिन फैमिलीज को गांव से निकाल दिया जाता था ब्राह्मण्स के द्वारा कि तुम्हारा देश निकाला करते हैं हम, ठीक है, देश निकाला उस टाइम पे ज्यादा बड़ा देश निकाला नहीं होता था। जैसे मेरठ से निकाल दिया और गाजियाबाद भेज दिया, इस तरीके का देश निकाला होता था। ठीक है, forgotten once the Buddha's follower joins monks. Buddhist Sangha, Vinaya Pitak, rules regarding Sanghas. Okay, so we will read about Buddhist Sanghas. Vinaya Pitak, rules regarding Sanghas, all men could join. So there is also a drawback in this line. All men could have joined at that time period. But women, children, slaves, and debtors, kings, servants, conditional. So there was condition for all these peoples. For all these peoples, there were condition. And women came at the last of the Buddhist, Gautam Buddha. Okay, at the last of the Gautam Buddha, when women came into the Buddhism, he said a statement that now the Buddhism will decline. Okay, now the Buddhism will decline because you have added women in that. I don't know why he said it. So he said that statement also. Any Sangha led simple lives. So from that time period, Buddhism really declined. Any Sangha led simple lives, meditated, taught, and begged. Bhikshus and bhikkhunis, females bhikkhunis, are males bhikshus. Meetings to settle quarrel.
Okay, meetings to settle quarrel. जैसे हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं, तो these meetings were held whenever there are dispute among itself. मतलब अगर बुद्धिज्म में एक वर्ग कह रहा है कि क्या कहते हैं, हमें गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, ठीक है, और एक वर्ग कह रहा है कि हमें गौतम बुद्ध की मूर्ति की नहीं, हमें उनके जो चीजें उन्होंने पढ़ाई है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए. So that's why many of the times the quarrel happened between the Buddhist, between the Buddhism. Many of the quarrels happened in between them. Meetings to settle quarrel. So these meetings were done to settle the quarrel. Brahmins, Kshatriyas, merchant laborers, barbers, courtsmen, and slaves. Barbers, courtsmen, and slaves. So these meetings were held in between them. Brahmins, Kshatriyas, merchant laborers, barbers, courtesans, and slaves. Wrote teachings of Buddha. Wrote teachings of Buddha. So Sangha wrote teachings of Buddha. Wrote poems on experience. Wrote poems on experience. So Sangha also wrote poems on experience. Teachings of Buddha. Teachings of Buddha. Poems on experience. Okay. Monasteries. Monks stayed at one place only in rainy season. So these are the conditions where in the monasteries, whatever has happened, it is according to them. Supports built shelters in gardens or in natural caves. Supporters built shelters. So whoever the supporters were, they built the shelters, and nowadays they have expanded at a very large scale level. Okay, because they have expanded those shelters into bungalows or some sort of palaces. Now many of the monasteries are now palaces. You can see many of the monasteries are now a kind of palace. Okay, so supporters build shelters in gardens or in natural caves. Or in natural caves, what are the natural caves? जो पहाड़ में ही अपने आप गुफा बन जाती है, ठीक है. Gradually they realized the need of a permanent shelters. So gradually they realized the need for permanent shelters. Otherwise, in the starting, they were roaming around the countries. Okay, they were roaming around the states, around the countries. So viharas were built. And these viharas are damn beautiful. Like Sanchi's too, and many of the viharas are damn beautiful. You can see them. Wood bricks, caves dug out in hills. So गौतम बुद्ध की मूर्तियों को बनाने लगे कि पहाड़ काट के उनकी तराशी करी और गौतम बुद्ध की मूर्ति बना दी. So in this way, viharas, विहार मतलब घर, विहार मतलब घर, एक तरीके से शेल्टर. ठीक है, विहार आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है डोम बनाने की. ठीक है, डोम बनाने की. तो डोम बन के और उनका डोम अलग शेप का रहता है, जस्ट लाइक अ यूएफओ. ठीक है, जैसा कि हिस्ट्री चैनल पे आप सभी ने देखा भी होगा, विहारास आर इन द शेप ऑफ यूएफओस. ओके, so these are the houses that were in the shape of UFOs. गोल गुम्बद टाइप कह सकते हैं, but their shape were just similar to UFOs. Viharas were built wood, bricks, caves, dug out in hills. Wood, bricks, caves, and dug out in hills. So one of the caves that were built in Pakistan, uh, it is being destroyed by the the terrorist organization recently. Okay, you all should check out that one, because it was destroyed completely by bomb blasting. That it, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा. ओके, अफगानिस्तान में है वो.
ठीक है. अफगानिस्तान में it was destroyed by Taliban. I think it was destroyed by Taliban. So you all should check it. Which cave was destroyed of Buddhist Gautam Buddha. Okay. So this type of question comes directly. They ask these type of questions. Built on lands donated by king, merchants, landowners. King, merchants, and landowners. So the donation was prominent in Buddhism. The donation was prominent, and they built their land, their viharas, and many of the things. Okay, but they always limit themselves. Okay, because the three pillars of Buddhism always says that don't expend your desires. Okay, the desires should be limited. बामियान केव. ओके, आप सभी को मैं बता देता हूँ. बामियान केव was destroyed by Taliban recently this year. Okay. Example of monasteries: Karle Caves, Maharashtra. Karle Caves, Maharashtra. नाम लिख लेना. एग्जाम्पल ऑफ मोनेस्ट्रीज: कार्ले केव्स महाराष्ट्र, और एक केव्स डग आउट इन हिल्स, उसका नाम लिख लेना. Bamiyan cave in Afghanistan that was destroyed by terrorists. Bamiyan cave in Afghanistan that was destroyed by terrorists. Karle caves, Maharashtra. Ashram system. During popularity of Jainism, during popularity of Jainism and Buddhism, Brahmins developed this system. So ashrams were developed. You can go in Ladakh region. You can go in many of the other regions, just like Sikkim also, Himachal Pradesh also. So they have developed this system, ashram system. They have developed, and the monks work very well over there. The monks work very well over there. Okay. During popularity of Jainism and Buddhism, Brahmins developed this system. Okay, Brahmins developed this system. Sorry, Brahmins developed this system, not the Jainism and Buddhism. So ashram was developed by Brahmins, and they begin to teach at ashrams only. It denotes stage of life: brahmacharya, grihastha, or vanprastha, and sannyasa. Okay, these are the life cycles. ब्रह्मचर्य, स्टार्टिंग में आपको ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए, मतलब जब तक आप करियर नहीं बना रहे तब तक आप अपना ब्रह्मचर्य अपना के रहे. फिर आप जैसे ही अपना करियर बना लें, उसके बाद गृहस्थ हो जाए. फिर जब गृहस्थ हो जाए और आपके बच्चे अच्छी तरह सेटल हो जाए, तो सेटल हो जाए नहीं, या फिर एडल्ट हो जाए. मतलब इनका कहने का मतलब था कि जब आपके बच्चे एडल्ट हो जाए, तो उसके बाद आपको अपना घर छोड़ देना चाहिए और जंगल में चले जाना चाहिए. मतलब वानप्रस्थ. ठीक है, अपना घर छोड़ दीजिए और जंगल में चले जाइए, और थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करिए, या फिर कुछ चीजें सीखिए नेचर से. ठीक है, उसके बाद संन्यास ले लीजिए. हर एक चीज से संन्यास ले लीजिए. ओके, हर एक चीज से संन्यास ले लीजिए. कपड़े वपड़े सब सब त्याग देना चाहिए. तो these are the four stages. It denoted stages of life: brahmacharya, grihas, vanprasth, and sannyasa. Sannyas. Okay, write these names because they ask the sequence always: brahmacharya, grihas, and vanprasth, and then sannyasa. Thus men spend more time meditating. Thus men spend more time meditating. देखिए, मेडिटेट कब करेगा वो सबसे ज्यादा? ब्रह्मचर्य में मेडिटेट करेगा, वानप्रस्थ में मेडिटेशन ही करेगा, संन्यास में मेडिटेशन ही करेगा. जब उसकी शादी हो जाएगी, उसकी बीवी आ जाएगी घर पे, तब वो बेचारा मेडिटेट नहीं कर सकता. ठीक है, बेचारा या बेचारी
तब वो मेडिटेट नहीं कर सकते. लिविंग गृहस्थ जीवन, living the grahast life cycle, in all the three stages, he will meditate and increase his knowledge. So there is no increase in knowledge in this system, grahast system. Thus men spend more time meditating. Generally women were not allowed to study Vedas and has to follow husband's ashram. Okay, so the status of women, as you all know, that it was declining in the later Vedic period. So you can all see it generally. Generally, women were not allowed to study Vedas. तो उन्हें पढ़ाई करने की एक तरीके से इजाजत नहीं थी, because Vedas were just like science of that time period. Okay, and has to follow husband's ashram. मतलब हस्बैंड अगर आश्रम में है, किसी आश्रम में है, तो उसके आश्रम के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ता था. ठीक है, अगर हस्बैंड ब्रह्मचर्य में है तो उसकी शादी तय कर दी जाती थी कि इसी से होगी. ठीक है, ब्रह्मचर्य में है तो वुमेन को भी ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में आएंगे तो दे विल मैरी, वानप्रस्थ में जाएंगे तो अलग अलग जंगल में जाएंगे, संन्यास लेंगे तो अलग अलग लेंगे. ठीक है, generally women were not allowed to study Vedas. Iran, Zoroaster, Iranian prophet. Sorry, Iran, Zoroaster, Iranian prophet. These were the two persons who visited to India. Zoroaster and Iranian prophet. What we have gained from them. Okay, what we have gained from them, matlab, in terms of God, or in terms of priest, we have gained from them Zoroaster and Iranian prophet. Avesta, book containing his teaching. Avesta, book containing his teachings. So Zoroaster की book है Avesta. Zoroaster को, और Zoroaster का ही ये दूसरा नाम है Iranian prophet, मतलब ईरान का prophet. ठीक है, very similar to Vedas. So यहाँ पे हमें पता चलता है कि his teachings were just copied from Vedas. Okay, Iranian prophet. Good thoughts, good words, good deeds survived for greater than 1000 years as a major religion of Iran. Survived for survived for 1000 greater than 1000 years as major religion of Iran. Some also migrated to Gujarat and Maharashtra, ancestors of Parsis. So who are the Parsis? Parsis are the people who migrated towards India because of their fight in their own country, because they were in dispute with the peoples in their own country. So they began to migrate towards many of the other countries, and India allowed them completely. So who are the Parsis? Parsis, just like Ratan Tata. Ratan Tata is also a Parsi. Okay, so these are the Parsi people. What Parsi always says that हम जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, हम भी उसी तरीके से भारत के सोसाइटी में घुल मिल जाएंगे. ठीक है, भारत की सोसाइटी में घुल मिल जाएंगे और हमारा पता भी नहीं चलेगा कि हम घुल मिल गए हैं. बस हमारा काम क्या रहेगा, सोसाइटी में मिठास देने का. ठीक है, जितनी मिठास हम दे सकते हैं उतनी मिठास हम देंगे. सो दूध के कंसेप्ट दिया था पारसीज ने. ठीक है, पारसीज ने ही ये दूध में चीनी मिक्स करने का कंसेप्ट दिया था कि अगर कोई भी देश सेक्युलर बनना चाहता है तो जो भी बाहर से लोग आते हैं उन्हें उस देश की सोसाइटी में घुल मिल जाना चाहिए. ठीक है, सो इन दिस वे socialism can exist, otherwise there will always be dispute. If you say that our God is great, your God is not great, मतलब इंडिया में डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि the God is considered always as great, not the humanity. The God is always considered to be as great, not the humanity. Let the humanity considered to be as great. Okay. Some also migrated towards Gujarat and Maharashtra.
महाराष्ट्र, एंसेस्टर्स ऑफ पारसीज। ओके, सो यहाँ से हम कल शुरू करते हैं अशोक का, और यहाँ से मैं आपको कल से काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट था और मुझे लगता है आज सभी को नींद भी आई होगी अच्छी खासी। कौन कौन सो गया? पक्का सोए?